देखते हैं कि हाउ थिंग्स मूव नाउ व्हेन वी यूज आवर पाकिस्तानी आईपी एंड ट्राई टू क्रिएट अ सेलर अकाउंट। तो हम sellercentral.amazon.com पे गए और हमने साइन अप की ऑप्शन को क्लिक किया और हमने क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट की ऑप्शन को क्लिक किया। हम यहाँ पे अपनी कुछ रैंडम डिटेल्स देते हैं जस्ट टू चेक कि हाउ थिंग्स गोइंग ऑन। और एक ईमेल है जो मैंने क्रिएट किया है जस्ट टू टेस्ट कि कैसे हम मूविंग फॉरवर्ड हाउ विल वी गो। ओके, तो इस ईमेल पे अब मुझे OTP आया होगा अमेजोन की तरफ से जो कि आ चुका है। ओके, दिस इज़ द OTP। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट की ऑप्शन को क्लिक किया। ओके, इट सेज इनवैलिड OTP, सो आई विल एक्चुअली 171007 171007 क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। ओके, अब ये देखिए, ये मुझे नेक्स्ट विंडो पे ले आया है जहाँ पे मैं कंट्री अपनी बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करूंगा। तो मैं बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। मैंने पी किया और देयर वी गो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज नाउ कमिंग इन कंट्री लिस्ट फॉर क्रिएटिंग सेलर अकाउंट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यू कैन इजीली सी दैट। मैं जूम भी करता हूँ, ये देखिए कि हम जब बिजनेस लोकेशन में गए जो कि पहले नहीं आता था, नाउ इट्स कमिंग ओवर हियर। ओके, तो बिजनेस टाइप अब हमें सिलेक्ट करनी है। तो मैं इसमें अभी इंडिविजुअल सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। नो, आई एम एन इंडिविजुअल। ओके ओके, अब मैं इसमें अपना नाम दूंगा और मैं एग्री एंड कंटिन्यू को क्लिक कर लूंगा। दिस इज अ रियली गुड न्यूज। आप सब ने देखा कि बिजनेस लोकेशन में पाकिस्तान आज से पहले नहीं था, एंड थैंक्स टू एवरीवन who did an effort to do this, कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया कि हम अपने बिजनेस लोकेशन पे सेलर सेंट्रल के अंदर पाकिस्तान को देख सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में हम पाकिस्तान अगेन, माशाल्लाह इट्स कमिंग। एंड नाउ कंट्री ऑफ बर्थ अगेन पाकिस्तान। ओके, डेट ऑफ बर्थ में अब हम जाएंगे, तो मैं रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ देता हूं। ओके, पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड, देयर वी गो। हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस आ रही हैं। हम नेशनल आईडी कार्ड भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो नॉट ओनली पाकिस्तानी पासपोर्ट बट वी कैन ऐड नेशनल आईडी कार्ड एज वेल। सो वी कैन गिव द नंबर। मैं कुछ रैंडम नंबर देता हूं। ओके ओके जी, डेट ऑफ एक्सपायरी भी मैं रैंडम दे देता हूं। ओके, कंट्री ऑफ इशू मैं पाकिस्तान दूंगा। ये आप लोगों को दिखाने के लिए है कि हम कैसे सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अमेजोन हमें पाकिस्तान की डिटेल्स पे सेलर अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन दे रहा है ऑफिशियली। ओके, बिजनेस एड्रेस में मैं एड्रेस दे दूंगा पाकिस्तान का। सो आई विल बी राइटिंग एनी रैंडम एड्रेस। ओके जी, देयर वी गो, आई कंफर्म। और उसके बाद मैं यहाँ कोई भी रैंडम सा नंबर दे देता हूँ जहाँ पे मुझे OTP रिसीव हो जाएगा। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आई कैन गिव एनी नंबर, मे बी आई हैव टू एक्चुअली गिव अ न्यू नंबर। सो लेट मी सी। Get 300. Okay. I'm just trying to find out the number so we can actually get the OTP. Okay. Okay. So I'm just waiting for the OTP. हमें OTP जैसे ही आता है, I'm just waiting for the OTP.
So we're gonna put the OTP, just bear with me for a second. Okay, हम OTP राइट करते हैं. ओके ओके, तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई. अब हम नेक्स्ट फेज पे जाएंगे और इस नेक्स्ट फेज में लेट्स सी व्हाट कम्स अप. ओके जी, तो हमें अब एक चार्ज मेथड लगाना है और चार्ज मेथड लगाने के बाद हम आगे चलते हैं. सो अगेन हम एक रैंडम चार्ज मेथड देंगे. ओके ओके okay जी. So there's some problem with it, but we can write another card. Just bear with me. हम कोई भी रैंडम सी डिटेल्स दे सकते हैं. ओके ओके जी, एक्सपायरी भी हम रैंडम से दे देते हैं एंड वी से ओके. ओके जी, हम नेक्स्ट फेज पे आ गए हैं. नेक्स्ट स्टेप पे ये हमसे कह रहा है कि डू यू हैव यूपीसी. नो. ओके, आर यू द मैन्युफैक्चरर. अभी हम इसको भी नो कर देते हैं. फॉर नाउ हमें जरूरत नहीं है. स्टोर नेम हमें कुछ देना है, हम कुछ भी दे देते हैं. AMZ PK टेस्टिंग. ओके ओके जी, फाइनली वी आर ऑन द पेज जहाँ ये हमसे कह रहा है कि आप अपने फ्रंट साइड और बैक साइड की आईडी की जो पिक्चर है उसको अपलोड करें और उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करें. ठीक है, तो हम रैंडम सी जो है फाइल उसको हम कर लेते हैं जी अपडेट. और अभी मैंने पासपोर्ट का एक क्लिम्स लिया हुआ है, सो आई जस्ट बी डूइंग दैट वन. मैं रैंडम सा कुछ दे रहा हूं ताकि हम सिर्फ चेक कर सकें कि इज इट गोइंग वेल. ओके, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में हम चेक कर लेते हैं. क्रेडिट कार्ड भी ऑप्शन आ रही है और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की भी आ रही है. ओके, सो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में हम क्लिक करते हैं और अपलोड करते हैं इसको भी. आई हैव बैंक स्टेटमेंट ओवर हियर. ओके जी, अब हम इसको सबमिट करते हैं. There you go ji. Finally, alhamdulillah, summa alhamdulillah, this is now happening in Pakistan on a Pakistani IP address के हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस इज नियरली कंप्लीटेड. और लेट्स सी अब अगला मैसेज क्या आता है. और डेफिनेटली ये अकाउंट अप्रूव नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें रैंडम डिटेल्स दी हैं और जस्ट चेक करने था हम लोगों को कि पाकिस्तान की आईपी एड्रेस पे
और पाकिस्तानी डिटेल्स एंटर करने की ऑप्शन आ रही है, जो कि आज से पहले नहीं आ रही थी। और नाउ वी कैन ऑफिशियली सी पाकिस्तान इन ऑन Amazon Seller Central, और हम अब पाकिस्तान की डिटेल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन to be patient and calm and have some knowledge about how to sell on Amazon first. पहले ये समझ लीजिए कि Amazon पे बेचना कैसे है, और उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। क्योंकि एक चीज बहुत अहमियत है एक चीज को समझने की, कि Amazon आपको एक दफा अकाउंट क्रिएट करने देगा आपकी डिटेल्स के ऊपर। ओके और ओके जी, जैसा आपने देखा ये Amazon ने मैसेज दिया कि वी हैव रिसीव्ड योर इंफॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 business days। तो इसने मुझे अभी जो यूजुअली हम पहले जब अकाउंट क्रिएट करते थे यूके की डिटेल्स पे, तो वो हमसे वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल भी समटाइम ही आस्क्ड फॉर इट, Amazon asked for it। लेकिन अब जो है कुछ भी ऐसा नहीं आया। 2 business days पे के अंदर हमें ईमेल आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने रैंडम डिटेल्स दी हैं और एक्चुअल डिटेल्स नहीं दी हैं, तो ऑब्वियसली ये अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को ये दिखाना था कि कितने स्टेप्स हैं और कैसे इजीली हम पाकिस्तान की डिटेल्स पे अब अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इंडिविजुअल ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आप प्राइवेटली ओन्ड कंपनी को सिलेक्ट करके भी बना सकते हैं। और फर्दर हम इस पे मजीद अब एक्चुअल और एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ बहुत ही जल्द हम एनेबलर्स R&D डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह रिसर्च लेके आएगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो हमें अलाउ कर रहा है Amazon और अप्रूव कर रहा है। देखिए अभी तो मैंने रैंडम डिटेल्स दी हैं, ठीक है, तो जब हम एग्जैक्ट डिटेल्स देंगे तो हमें पता लगेगा कि Amazon ने अकाउंट अप्रूव कौन सा कर रहा है, इंडिविजुअल भी कर रहा है या प्राइवेटली ओन्ड कंपनी का कर रहा है या सोल प्रोप्राइटर का कर रहा है। तो इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज वी विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो टू लेट यू ऑल नो कि हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क।